Good evening and welcome to today's webinar, Naturopathy for Healthy Aging and Longevity. We will just wait for another 5 more minutes for any other participants to join, and then we'll begin the session. I'll request Dr. Maria to take over in 5 minutes. Good afternoon, everyone. I am Dr. Maria Libreros Pinot, and I am the Executive Director at the Venu Naturopathy Center. Thank you for joining us as we celebrate National Naturopathy Day with this enlightening session. Today's discussion focuses on a critical topic, healthy aging and longevity, and how naturopathy offers a path to achieving both. Before we dive into the session, let's take a moment to reflect on why we observe National Naturopathy Day. November 18 marks the anniversary of the foundation of the All India Nature Cure Foundation Trust in 1945 by Mahatma Gandhi, a staunch advocate of naturopathy and its principles.
Gandhiji firmly believed in the healing power of nature and its ability to address the root causes of illness. For him, naturopathy was not just about physical well-being, but also about living a life aligned with simplicity, discipline, and self-reliance. He often said, nature cure is not merely a method of curing disease, it is a way of life. Gandhiji's vision paved the way for naturopathy to flourish in India, inspiring a movement that emphasized preventive health, natural therapies, and holistic living. Today, as we celebrate this day, we honor his legacy and reaffirm our commitment to embracing naturopathy as a pathway to well-being. As we celebrate this important day, it's relevant to discuss one of the most pressing health issues of our time, healthy aging. Globally, populations are living longer than ever before. In India, the elderly population is rapidly increasing, and by 2031, it is expected to exceed 194 million. This remarkable demographic shift brings with it significant challenges. Chronic diseases like diabetes, hypertension, arthritis, and cognitive decline are becoming more common, placing a heavy burden on families and the healthcare system. Healthy aging is about more than just extending the lifespan. It's about enhancing the quality of life, ensuring that individuals remain active, independent, and fulfilled as they age. This is where naturopathy plays a crucial role. At its core, naturopathy emphasizes preventive care, the body's innate ability to heal itself, and holistic wellness. For aging individuals, this means addressing not just physical symptoms, but also the mental and emotional dimensions of health. An integrated approach combining naturopathy with modern medicine is particularly effective. While allopathy provides advanced diagnostics and treatments, naturopathy focuses on lifestyle modifications, natural therapies, and long-term solutions. Together, they create a comprehensive framework for managing age-related conditions, preventing chronic diseases, and enhancing overall vitality. From yoga and dietary adjustments to stress management and detoxification, naturopathy offers practical tools for healthy aging that are accessible to everyone. For those seeking a trusted partner on this journey, the Venu Naturopathy Center stands as a beacon of hope and transformation. At Venu, we bring together the ancient wisdom of naturopathy and the innovations of modern healthcare to address the challenges of aging holistically. 44 years after the foundation of the first eye hospital by our visionary founder, Dr. R.K. Seth, we strive to keep his vision of quality life for all alive. Whether it's personalized health programs, therapeutic yoga, natural detox plans, or stress relief therapies, Venu offers a safe and nurturing environment for individuals to reclaim their health and vitality. Beyond treatments, we are committed to empowering families and communities to adopt preventive health practices, creating a ripple effect of well-being across generations. To bring today's theme to life, we are honored to have with us a panel of distinguished speakers. Each of them brings invaluable expertise and insights into naturopathy, integrative medicine, and healthy aging. These highly engaging presentations will be followed by a Q&A, where you will be able to delve deeper in today's topics. Please feel free to use the chat box and drop your questions there. I also request all participants to please be on mute. Thank you. The first speaker will be Venu Naturopathy Center's Medical Director, Dr. Moria, a BNYS doctor with over 15 years experience in the field of naturopathy. He will be presenting the general principles of naturopathy
and how these can be applied to healthy aging and longevity. Welcome, Dr. Moria. Thank you for joining us. Let's begin. Good afternoon, and thank you, Dr. Maria. So from here, I would like to explain or share my thought about the naturopathy and how naturopathy works in aging, controlling aging and longevity. So first of all, want to talk about the naturopathy. So basically, naturopathy works on certain principles. And the most important principle is that body has ability to heal itself. And in natural therapy, we use multiple things or multiple processes, which include your diet, your hydro, herbal, aroma, yoga, just to maintain balance and health. So managing age with naturopathy. So first of all, aging, as we know, we have a common understanding that what is aging. So as we know that age means when there is a wrinkle, when there is a deterioration, it's quite common. But here in naturopathy, the aging, it is characterized by organ and organ system changes that vary among individual depending on their physical, emotional, psychological, and social changes, experience in the life. And these changes influenced by the factors like your genetics, physical and social environment, along with the stress. Now the cause of aging. So there are multiple causes, but here I just wanted to share few. Okay, so, and of course, based on that, I will focus on one particular thing. And it is as it is a complex process. So the main thing of aging is a DNA alteration because of certain things. And of course, then the cellular damage or cellular changes that also play an important role in aging. And the environmental factor, which is very common and quite obvious, and the lifestyle, which is the most important. So if our lifestyle is okay and we know we have information, then we can manage many things. So how we are assessing? So before entering into the aging controlling processes, we assess how. We take detailed medical and personal history. We check vital signs, physical assessment, that is also very important in aging, and most important, digestive status. So when I say the digestive status, this is most important because without knowing the digestive status of a person, it is difficult to guide further, right? And what are the diseases or illnesses? So there are multiple things which involve, which enhance the aging process. There are many issues. If we will leave the communicable disease, then there are other diseases which create a multiple issues and enhance aging process fast. So the management of naturopathy, if I will talk, then the diet, hydro, mud, yoga therapy, massage, and aromatherapy. So let's start with the diet. We assess, before telling the diet, we assess body type, person's vitality, there are changes in yin and yang, whether person is deficient or have more energy or heat or cold, and then we design the protocol. In naturopathy, diet therapy focus on the live food because there are different type of food. We focus on the detoxification,
And through that, we promote vitality and longevity. Most important is the balance natural nutrition, which includes your vitamin, minerals, trace elements. So before entering further, I just wanted to take an example of free radical. हम में से बहुत लोगों ने free radical and free radical and antioxidant के बारे में सुना होगा. So basically, I just wanted to focus what is the free radicals. So free radical जो होते हैं बहुत ही normal layman language, it's very unstable and it's react very fast. Because of that reaction and because of those reaction, system get hit easily. तो हमारे सिस्टम में जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स होंगे उतनी ही ज्यादा हमारे डैमेजेस के चांसेस हैं. एंड वी ऑल नो दैट फूड इज समथिंग विच कैन हेल्प, बट व्हाट काइंड ऑफ फूड? एंड इन द डीजनरेटिव इश्यूज, अगर मैं बात कर, इफ आई विल टॉक अबाउट द स्पाइन एंड द ब्रेन, सो ब्रेन एंड स्पाइन इज द ऑर्गन जहाँ पर सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट का एक्यूमुलेशन होता है, right? And the another reason for the oxidation of the unsaturated fatty acid, unsaturated fat. Unsaturated fat में जब oxidation होता है, so it is just like, you know, you ignite something and then the fire broke out. इसके चलते again there is lot of issues which enter in our system. One more thing, even the brain and spinal cord involved play a major role in the aging. But again, the question comes, then why it affect so, I would say, last? Like why it is its work so long? The reason is very simple. हमारे spine and brain में अगर मैं बात करूं vitamin C, so it is 10 times than the blood. So you can understand if the vitamin C, which is most important for anti-aging, is 10 times more. So because of that, our system, like our spine and brain, works well. And when the degenerative issues changes, then the deterioration starts. So it is clear that we need a high dose of sufficient dose of vitamin C. And again, we also know that in India, easily available vitamin C in the form of vitamin C is a citrus fruit, and of course the amla, that gooseberry, Indian gooseberry. Most important thing is we think we take 2 amla a day and work over, but not. I would suggest and guide, like tell you, we need twice a day vitamin C, morning and evening. If you will not add enough vitamin C in your diet, morning and evening, then it is difficult because it passes through the urine in just 3 to 5 hours. So this is something which is very important beside the vitamin A, vitamin E, B, B5, selenium, bioflavonoid. So we can, if someone can focus on vitamin C, can easily give some sort of help in aging, anti-aging, I would say. Next is hydrotherapy. So hydrotherapy also play very important role, and we use water at various temperature. And there are certain specific treatment, especially for old age, that's the foot bath, because we know in old age, the issue is quite common, like diabetes, heart, dementia. So foot bath is something which is very simple and very effective. It helps to reduce your cardiac load. Your hip bath again, it's very important because if you like I explain about the digestive health. So digestive health is something which is very, very important. So अगर हम digestive health को
improve nahi kar payenge, then again we will not reach anywhere. So for that we have a hip bar, we have alternative compress, back, and spinal spray, because the spine play important role in all these brain and spine. So in all these degenerative issues. And so what are the benefits? The benefit, it improves the circulation, support the detoxification, reduces stress, enhance immunity, and rejuvenate cells. Mud therapy. So mud therapy is another important therapy which helps a lot when it is comes to the skin issues or aging. So we apply mud along with certain herbs, or sometimes plain herbs, but it is a different mud, sorry. The benefit, it rejuvenate skin and restore metabolic balance, increase blood supply, help in removal toxins, and enhance digestion. So digestion and free radical control karna, it's the most important. Manipulative therapy, again, there are a lot of issues related to the age. So here manipulative or massage therapy help a lot. And we use medicated oil and different kind of oil based on the requirement. We also add vitamin E applications, right? And massaging. So the benefit is stimulate lymphatic system, lymphatic drainage, improve immune function, reduce muscle tensions, relieve stress, and of course, the mobility. Aroma. That is another important therapy which we use a lot in when it is comes to aging, healthy aging. So aromatherapy works on the emotional center of the brain. We have a different type of center in our brain, which works, right? So aroma, we use different type of oil, different type of herbal preparation. For example, rosemary oil. So rosemary oil is, again, boost your concentration and memory. And when it is comes to the mobility and pain and aches, which is quite common in old age, so we use peppermint eucalyptus oil for relieving joint stiffness and reducing the muscle pain and aches. Similarly, chamomile, lavender oil, neroli oil. So there are many. So if someone can follow the aromatherapy properly along with the diet, the mud, the water, then good help can be given to the patient. And of course, this is all not completed without the practice of yoga. So when we talk about the yoga here, the yoga is something which which helps improve the mobility or joint stiffness, because this joint stiffness is quite common. So we guide very specialized yoga. Specialized mean based on the person's ability and his by checking the range of motion and all, then we are guiding the yoga part. Of course, we have a yoga speaker. They will guide us more. So with that, I just wanted to say thank you. And thank you very much for listening carefully. Thank you. Thank you so much, Dr. Moria, for this enlightening presentation. I would now like to welcome Dr. Koshlendra Dwivedi, who is a highly experienced naturopath and the Chief Medical Officer at Patanjali Wellness in Guwahati. With over 10 years' experience in the field, he has successfully treated a wide range of chronic conditions, including cancer, liver disease, and kidney disorders. Known for his unique approach to patient care, Dr. Dwivedi integrates traditional naturopathic principles with modern healing practices.
He has also published research on the efficacy of integrated therapies in the treatment of chronic liver disease, which was featured in the International Journal of Ayurveda and Pharma Research. Today, he will be presenting on the science of aging, offering professional insights into its natural management. Welcome, Dr. Vivedi. The floor is yours. Hello. Uh, Hi everyone. Myself Dr. कौशलेंद्र द्विवेदी. आज हम लोग नेचुरोपैथी डे के एक दिन पहले नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेशन में वेबिनार कर रहे हैं और जो मेरा टॉपिक है द साइंस बिहाइंड द एजिंग. मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. कुछ लैग आ रहा है. कुछ तो लैग है. मैं So, okay, sir, you can Yes, speak yes, yes. and I can coordinate. Yes, thank you so much, अंशिका. तो आज का मेरा टॉपिक है द साइंस ऑफ एजिंग, हाउ नेचुरोपैथी कैन टर्न बैक द क्लॉक. आज हम समझेंगे कि एजिंग का कॉज क्या है. अगर हम एजिंग को समझें तो प्रैक्टिस में तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स फिनोमेना जो कि हमको इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, इन्वायरमेंटल एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स. जो एजिंग हो रही है हमारी, उसके पीछे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फिनोमेना काम करते हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जिसमें कि स्पेसिफिक जीन्स होते हैं. स्पेसिफिक जीन्स हैं जो जो इंट्रोड्यूस करते हैं कि कैसे वहाँ पे जाके हमारा जीन कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे है, सेलुलर लेवल पे है, और ये कैसे वेरियस ऑर्गन्स पे काम कर रहे हैं, कैसे वेरियस सिस्टम पे काम कर रहे हैं. क्योंकि जब एजिंग होती है तो बहुत सारे हमारी सारी चीज़ें ही हमारी डैमेज होती है. जैसे बढ़ती उम्र के साथ कार्डियक की जो धमनियाँ होती है वो नैरो हो जाती है, चेस्ट जो है हमारा डिस्कम्फर्ट फील कराता है, ब्रीथलेसनेस होता है, स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, माइंड का जो फंक्शन है वो कॉग्निटिव हो जाता है. तो ये चीज़ें हैं. एज रिलेटेड डिजीज भी हो जाती है, इसमें स्पेसिफिक जीन का भी होता है. दूसरे में आते हैं तो हम देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में अगर थर्ड स्लाइड करेंगे हम,
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और उसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। समय समय पे टाइम टू टाइम इसमें थ्योरीज दी गई एजिंग की, तो जिसमें से 3 थ्योरीज जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहली थ्योरीज है अपनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थ्योरी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब भी हम देखते हैं तो आजकल सारे लोग ये एक पैटर्न में मॉडर्न साइंस में ये बोल दे रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ कहाँ से रहा है? आपने कभी भी ये देखा होगा कि कभी भी किसी को गुस्सा आता है, एंजाइटी हो रही है, गुस्सा हो रहा है, तो उसका हार्ट फुलनेस होता है, एसओबी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगती है, डिस्पनिया हो जाता है। हम उसकी चेस्ट पे, अपर बैक पे जाके वहाँ पे कुछ हल्का सा मसाज करते हैं या हल्का सा कुछ उसको पॉपुलेशन करते हैं, तो जाके वो सही होता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से अगर हम एकदम लेमन लैंग्वेज में बोले तो यहाँ पे जाम लग जाता है सेलुलर कोशिकाओं, इंट्रासेलुलर जो हमारी एक्टिविटी है वहाँ पे कमी हो जाती है, जिससे कि सेल्स जो है वो रिप्लिकेट होने लगते हैं और जो है वहाँ पे उनके बीच में जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है ऑक्सीजन की, तो उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलेंगे। ऐसे ही टोलोमियर थ्योरी है और माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आप ये देख सकते हैं कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो रहा है, तो डैमेज हो रहा है उसके सेल्स को, और जो हमारा टिश्यू है वहाँ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हो रहे हैं, अर्थात जो ऑक्सीजन है हमारा चल रहा है वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं पे बैक डाउन हो रहा है, कहीं ना कहीं पे उसका सर्कुलेशन रुक जा रहा है। इसीलिए जब कभी अगर किसी को पैर में क्रैम्प्स आते हैं, कहीं क्रैम्प्स आ रहे हैं, सोडियम वगैरह की कमी हो रही है, तो वहाँ भी आपका इंट्रासेलुलर एक्टिविटी डैमेज होने के कारण और इम्पेयर्ड फंक्शन होने के कारण ही ये हो रहा है। अब ये क्या करते हैं, डीएनए को भी डैमेज करते हैं, प्रोटीन को भी और लिपिड्स को भी, क्योंकि ये पूरा सेलुलर डिसफंक्शन कर देते हैं और यही कॉज करते हैं आपका एज रिलेटेड डिसऑर्डर में। जैसे जो कॉग्निटिव हमारे होते हैं, जो डिक्लाइन करते हैं फैक्टर्स को, ये जाके वहाँ पे डैमेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी ही चीज़ों में डैमेज कर रहे हैं। न्यूट्रिशन तो हम ले रहे हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू जो हमारा सर्काडियम रिदम है, जो हमारे इंटरनल साइकिल है, उसके इंटरनल साइकिल के हिसाब से वो चल नहीं पा रहा है। दूसरा, अगर हम तीसरे थ्योरी की बात करें, दूसरी थ्योरी की, तो माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरीज आती है। ये कहते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज टू द माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा एक्यूमुलेट हो रहा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसके कारण क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं वो डैमेज हो रहे हैं, जिसके कारण कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी हमारा पावर हाउस है वो डैमेज कर रहे हैं किसको, रिएक्टिव ऑर्गन, फिर वही ऑक्सीजन के साथ, और सेलुलर डिसफंक्शन कर रहा है, फिर वही एज रिलेटेड डिजीज ये क्रिएट करेंगे। थर्ड वन, टेलोमियर डिसफंक्शन। टेलोमियर डिसफंक्शन में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके ये शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमियर्स, ये प्रकार की जो है क्रोमोसेल्स के एंड में काम करती है, जो कि डीएनए रिप्लिकेशन में मदद करती है। ये प्रोटेक्टिव कैप की तरह होता है। जैसे अगर इनामेल कैप को हम बात करें, आपका टिश्यू का कनेक्टिंग सुपरफिशियल लेयर की स्किन की बात करें, तो वहां पे जाके ये टेलोमियर शॉर्टेन होता है, और इब्री इब्री ईच सेल की प्रत्येक कोशिका जो है हमारी वहां पे पहुंच के वो डिवाइड नहीं हो पाती, जिससे कि सेलुलर सीक्वेंसेस में कमी आती है और एजिंग जो है वो अकर होती है। थर्ड वन इज एजिंग जब होती है हमारी तो कई प्रकार के रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। ये तो 4 बीमारियां केवल नाम की हो गई हमारी। एजिंग हमारा मेजर रिस्क क्या कर रहा है कि कभी कभी ऐसा हम देखने में आ रहा है कि जो पहले के समय में लोगों को एक एज के, सर्टेन एज के बाद जो है बीमारियां होती थी, वो अभी हो जा रही है। जैसे हमारे यहाँ पतंजलि में कई सारे पेशेंट्स आते हैं, जैसे आप डायबिटीज को ही ले लीजिए, अभी 24 से 25 साल के लड़कों को डायबिटीज हो जा रही है, अभी टाइप 2 डायबिटीज हो जा रही है। टाइप 1 डायबिटीज में हम लोग कराते हैं सी पेप्टाइड वगैरह, जो भी टेस्ट हैं, जो मॉडर्न टेस्ट हैं उनको कराते हैं, लेकिन वो अर्ली डिकेड में उनको हो जा रही है, अर्ली बीमारी हो जा रही है, अर्ली एज में हो जा रही है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो डैमेज हो रहा है कहीं ना कहीं, और उसकी वजह से ये बीमारियां आ रही हैं। इसकी वजह से और फर्दर में जो आती हैं वो आती है क्योंकि वहाँ पे हमारा जो फंक्शन है सेल लेवल पे वो डिक्लाइन करता है, वो हमारा बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है वो धीरे 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 करके अगेंस्ट द पैथोजन, अगेंस्ट द जो है बैक्टीरिया, अगेंस्ट द अलग अलग चीज़ों से रेजिस्टेंस होता रहता है। अब हम आते हैं जो सबसे पहले हमारे चीज़ पे, एलिमिनेशन चैनल्स हमारे बॉडी में। मैं आज नेचुरोपैथी डे है तो आपको एक
इसका एक साइकिल बताना चाहूँगा जो इस स्लाइड में नहीं है। हमारा बॉडी जो है वो पंच महाभूत से मिलके बना है। अगर हम 5 एलिमेंट से देखें तो अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु। अब वो पांच महाभूत से बना है, उनको रखने के लिए 5 चीजें हमारे बॉडी में ऑलरेडी डिसाइडेड है। उसको कहते हैं पंचकोशा, पंचकोश थ्योरी। अन्नमय, विज्ञानमय, मनोमय, हाँ, आनंदमय, ये करके ऐसे 5 कोश हैं। 5 कोश में पंच प्राण है, 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। उसमें प्राण में, उदान में, व्यान में, समान में, अन्न में। तो प्राण, व्यान, समान, उदान और प्राण, ये अपान, ऐसे करके पंच प्राण है। और वो पंच प्राण जो है पंच ज्ञानेंद्रियों को और पंच कर्म इंद्रियों को जो है रेगुलेट करते हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी से निकलने वाली चार चैनल्स ऐसे हैं जो कि एलिमिनेशन को कंट्रोल करते हैं कि हमारे बॉडी से टॉक्सिसिटी कैसे निकल रही है। ऐसे 4 चैनल बनाए गए हैं, जिसमें से एक किडनी है, एक लंग्स है, एक स्किन है और एक बावल पे। अब हम स्किन पे बात करेंगे। तो स्किन क्या है कि सबसे पहले जो चीजें रिफ्लेक्ट आती हैं एजिंग का, वो स्किन पे दिखती है। कॉमन चेंजेस होते हैं, इम्प्लीकेशन होते हैं। जैसे सबसे पहला एक्ने है। एक्ने क्या करता है? इंडिकेट्स हार्मोनल इम्बैलेंस एंड डाइटरी इशू। एक्ने जब किसी के शरीर में आ रहा है तो उसमें ये कह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट कर रहा है डिहाइड्रेशन से। लोग कहते हैं वाटर कंजप्शन कम हो रहा है आपका, या फिर आपका जो है हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, पीसीओडी, पीसीओएस, या फिर अर्ली मैच्योरिटी पीरियड आते हैं उसमें होते हैं। डाइटरी इशू, आप अच्छे से नहीं लंच डिनर या जो भी आप अच्छे से डाइट नहीं ले पा रहे हो। उसके बाद आता है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन क्या करता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है डिहाइड्रेशन को, थायराइड को, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को। जो हमारे मल्टीविटामिन्स हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं, उनका अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, शरीर को अच्छे से मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो ड्राई स्किन आ रहे हैं। थर्ड वन इज रेसेस। रेसेस ये एक साइन है एलर्जीज का, ऑटोइम्यून कंडीशंस का और इन्फेक्शन का। और उसके बाद आते हैं पेलर। पेलर में भी आपके ये साइन दिखाते हैं कि ये इन्फेक्शन, कोल्ड, एनीमिया को सजेस्ट कर रहा है और पुअर सर्कुलेशन कर रहा है। अब फैक्टर्स हमारे कौन कौन से होते हैं स्किन हेल्थ के लिए? इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ सकते हैं। इसमें एज और जेंडर, मेल और फीमेल का अलग अलग इंट्रोडक्शन होता है कि भाई ये मेल का अलग कुछ हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, फीमेल के अलग हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। एज है हमारा, एज के रिकॉर्डिंग भी होते हैं, 22 से 25 प्यूबर्टी एज, आफ्टर प्यूबर्टी डिकेड्स, जेनेटिक्स लोगों में। फिर जेनेटिक्स में भी है कि कौन से किनका जेनेटिक्स, जीन का कोई ऐसा कोई कारण तो नहीं है। उसके बाद एक्सपोजर होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, सन का, क्लाइमेट का और पॉल्यूशन का। हम कितने देर बाहर रह रहे हैं, क्लाइमेट का चेंजेस कैसे हो रहा है, बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, कौन से क्लाइमेट में रह रहे हैं, ट्रॉपिकल में है, ट्रोपोबिक में है, किसमें है। उसके बाद आते हैं लाइफ स्टाइल फैक्टर्स में, हम एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रिशन हमारा किस टाइप का है, स्लीप में हम कौन सी साइकिल फॉलो कर रहे हैं, कौन सी साइकिल नहीं फॉलो कर रहे हैं, हमारा बाकी जो एजुकेशनल वेल बीइंग है वो कैसा है, ब्यूटी का हमारा रूटीन कैसा है, हम कितनी बार फ्लश आउट कर रहे हैं, कितनी बार चेहरा धुल रहे हैं, ये चीजें आती हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं गट स्किन एक्सेस का। ये मेन है। इसमें अगर हम देखें तो ब्रेन जो है हमारा, वहाँ बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे स्किन के थ्रू जो कि हमारे ब्रेन तक पहुँचे। तो अगर हम देखें हाइपोथैलेमस में जो सीआरएस करता है, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, उसको प्रोड्यूस कर रहा है। फिर पिट्यूटरी जो है वो सिक्रेट कर रहा है प्रोपिरोमेलेकोट्रोनिन को, और उसके बाद फिर एसीटीएच, एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन। वहाँ से ये जाने के बाद फिर इधर आ रहे हैं, फिर स्किन की जो लेयर्स हैं वहाँ पे ये सीआरएच करके प्रोलैक्टिन के हिसाब से आ रहे हैं, और वहाँ गट का और स्किन का एक्सेस हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो एक्टिवेशन होगा वो होगा गट से। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे ये गट का इशू को कैसे हम क्लियर करें। तो ये एक्सिस होता है जिसको गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। तो गट ब्रेन एक्सिस में हम जो है ये डिफाइन कर पाते हैं कि अगर हम स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं तो उसका कैसे एब्जॉर्प्शन होकर हमारा न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैसे उसको आगे की तरफ एब्जॉर्प्शन करा रहा है, और कैसे हमारा वहाँ पे जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो रहा है, और हमारा जो बायोम है वो उसकी एक्टिविटी
कैसे अच्छी हो रही है, कैसे गट बैक्टीरिया अच्छे हो रहे हैं, कैसे इंट्रेंसिक सिस्टम जो है इंट्रेंसिक हमारा वो काम कर रहा है, हमारा मूड कैसा है, हमारा स्विंग हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे हमको एक्टिवेट करें, गट माइक्रोबायोम इसको बोलते हैं दरअसल। और अब इस पे हम स्किन पे कैसे फास्टिंग का कैसे इम्पेक्ट करते हैं, ये सेकेंड इस 15 अगर आप कर पाओगे। तो कैसे हम इसको डैमेज से को रोकें, जैसे फास्टिंग का एक हमारा नेचुरोपैथी का मेन सिद्धांत है, आयुर्वेद में भी कहते हैं लंघनम परमम औषधम। तो जो हमारा फास्टिंग है वो मिरेकल्स है। तो फास्टिंग से कैसे हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, कैसे एजिंग को रोक सकते हैं, वाटर इनटेक हमारा कितना रहना चाहिए, एनीमा की जो प्रक्रियाएं हैं, अगर पतंजलि में आपको बता पाए तो पतंजलि में बहुत सारे प्रकार के एनीमास दिए जाते हैं, इसमें कोकोनट वाटर, त्रिफला एनीमा, अलग अलग डिजीज के हिसाब से हमारा मेडिकेटेड एनीमा भी है जो मेडिसिन के हिसाब से हम लोग यहाँ पेशेंट पे देते हैं। और एक चीज़ यहाँ और शेयर करना चाहेंगे फास्टिंग के हिसाब से कि फास्टिंग एक मलेस्मा के पेशेंट थे। मलेशिया में हमारा जो कोकोनट वाटर होता है उससे 7 डेज का मैंने फास्ट कराया था, 7 to 10 डेज, और उसमें उनका मलेशिया जो है काफ़ी हद तक 70 से 80% तक क्लियर हो गया था। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। ऑनली कोकोनट वाटर विथ स्प्राउट्स से किया था मैंने। स्प्राउट्स रॉ स्प्राउट्स थे, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया था, विदाउट साल्ट। तो स्प्राउट्स और कोकोनट वाटर से आप मलेशिया को कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज आते हैं इसमें, फिर सनलाइट आता है, केमिकल का एक्सपोजर नहीं करते, विटामिन सी का जैसे अभी मौर्य सर ने बताया था कि विटामिन सी इतना ज़्यादा भर भर के है, तो दो दो आंवला अगर हम खाएं तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आएगा। तो इन चीज़ों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं 16 में। तो नेचुरोपैथी में कुछ आरोग्य रक्षक पंचतत्व बनाए गए हैं, जिसमें जो लेट डॉक्टर बी वेंकट राव के द्वारा कि हमको क्या क्या करना चाहिए। तो प्रे ट्वाइस अ डे, हमको प्रार्थना करनी चाहिए, योग 2 बार करना चाहिए, सप्ताह में 1 बार फास्ट करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए और 2 बार खाना खाना चाहिए। तो ये पंचम तत्व बताए गए हैं आरोग्य रक्षक के। और इसके बाद डाइटरी सप्लीमेंट्स में अगर हम देखें तो हमको कौन कौन से नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी में एब्जॉर्प्शन कराने के लिए और बॉडी को अच्छे से रीजनरेशन कराने के लिए। उसमें विटामिन ए, ई, सी, ओमेगा 3, बीटा कैरोटीन, फैट्स अच्छे से लेने चाहिए, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, बैलेंस्ड मील क्या है, संतुलित आहार। हम जानते हैं ना 50% का अपना हमारा फाइबर से आना चाहिए, 25% प्रोटीन से आना चाहिए, 25% जो है कार्ब से आने चाहिए, ऐसे करके। और उसके बाद अगर देखेंगे तो नेक्स्ट में मेजर इनटेक हमको क्या रखना चाहिए, कैरेट्स रखने चाहिए मेजर इनटेक्स में, बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए है, टोमेटो लेना चाहिए, कई प्रकार के वेजिटेबल्स हैं जिनमें लो कैलोरी के हैं, और ज़्यादा तौर पे हमको डार्क कलर की वेजिटेबल लेनी चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे शेयर करेंगे लीवर का, चूंकि मैंने काफ़ी रिजल्ट देखा है, तो लीवर के लिए आप क्रूसीफेरीज वेजिटेबल ऐड करते हो अपने फूड में, क्योंकि क्रूसीफेरीज वेजिटेबल आपके ग्लूटाथियान का अच्छा सा मैकेनिज्म कराता है, जिससे कि आपका लीवर प्रोटेक्शन में मदद मिलता है। ये जब आप ये करते हैं वेजिटेबल्स, तो स्किन जो है आपका अच्छा रिस्पांस देगा। इसमें विटामिन सी है, इसमें आपका बेल पेपर्स हैं, काफ़ी अच्छा रोल है बेल पेपर्स का। हम लोग यहाँ पे किडनी में एक सैलेड देते हैं, सलाद के रूप में उसको देते हैं लो पोटेशियम रिच डाइट में। तो उसमें बेल पेपर्स हैं, रेड येलो बेल पेपर्स हैं, ब्रोकली है, और आपके पीनट मटर डालते हैं उसमें, पीस डालते हैं। आपके डिटॉक्स ड्रिंक अगर हम बात करें तो हर जगह ही अपने अपने नेचुरोपैथीज के, और हम लोग नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं डिटॉक्स ड्रिंक का, जिसमें ग्रीन टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्ट्रेस को लोअर करेगा, गुड स्लीप करेगा। ग्रीन जूस देते हैं जिसमें स्पिनच वगैरह का, मिंट का, जिंजर का, टर्मरिक का, इनका देते हैं। वे वाटर देते हैं जो सपोर्ट करता है हमारे लीवर को, लीवर डिटॉक्स को। फिनल वाटर देते हैं, बटर मिल्क अच्छा है गुड बैक्टीरिया माइक्रोबायोम के लिए भी। आंवला जूस, विटामिन सी, लेमन हनी जूस ये देते हैं। सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, बेरीज, ऑरेंज, और हेल्दी फैट्स देते हैं। अदर में लेग्यूम्स में देते हैं बायोटीन वगैरह जिसमें पाया जाए, और ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, सीड्स हैं, सीड्स की साइकिल के अनुसार देते हैं। अब बैड डाइट्स क्या है, शुगर है, स्पाइसी हॉट फूड्स हैं, कैफीन है, चॉकलेट, फैटी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड,
ये सब चीज़ें हैं। और प्रैक्टिस योग वगैरह का करना चाहिए। तो कंक्लूजन ये है कि अगर हम इन सब सारी चीज़ों को फॉलो करें, 3 चीज़ें मैं आपसे बोलना चाहूँगा। 3 चीज़ों में ये है, फर्स्ट थिंग कि हमको कभी भी नेचुरोपैथी में के डाइट के हिसाब से एक सर्काडियन रिदम को फॉलो करना चाहिए। जो मैंने जाना है कि 3 साइकिल हमारी होती है। पहली साइकिल हमारी होती है डाइजेस्टिव साइकिल, दूसरी साइकिल होती है हमारी न्यूट्रिटिव साइकिल और तीसरी होती है एलिमिनेटिव साइकिल। तो डाइजेस्टिव साइकिल हमारी चलती है दोपहर के 12 से रात के 8 बजे तक, और जो हमारी न्यूट्रिटिव साइकिल होती है वो होती है शाम को रात को 8 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक, और एलिमिनेटिव साइकिल चलती है सुबह 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। इन्हीं एलिमिनेटिव साइकिल में इसीलिए सारे लोग हम लोग बोलते हैं कि आप जूस पियो, आप सब्जियां खाओ, आप फ्रूट्स खाओ, फल खाओ। वो इसलिए क्योंकि आपका जितना एलिमिनेशन होगा बॉडी से उतना आपका गट क्लीन रहेगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Dwivedi. We will now welcome Dr. Atasham Alam, healthcare expert and wellness coach, lifestyle trainer, and center head of SAAOL Heart Center Nagpur with 15 years of clinical experience, who will present the results of his exciting research on the effects of naturopathy on the heart. Dr. Alam, welcome. Thanks, Dr. Maria, ma'am. Can I share my screen? Yes, you can, Dr. Alam. Okay. My screen is visible? Yes. Okay, thank you. So, hello everybody. Myself, Dr. Intisham Alam Faruqi. I'm from Nagpur. I'm a heart care expert, wellness coach, and lifestyle trainer from the last 15 years. I'm having a 15 years of clinical experience. Presently, I'm working with Saul Heart Center, which is the biggest non-invasive cardiology chain of India. Here we help our patient to prevent coronary artery disease and reversal of heart disease. And first of all, I would like to thank Venu Naturopathy Institute and all their team members who given me an opportunity to present me and my studies of naturopathy on heart disease on this naturopathy day. So coming to the topic, so we'll discuss some basic things like what is circulatory system and how it works. So basically, the circulatory system is basically a cardiovascular system. It pumps blood from heart to lungs to get oxygen, and then heart sends oxygenated blood through arteries to the rest of the body. The veins carry deoxygenated blood back to the heart to start the circulation process over. So this is the circulatory system. In this way it works. Okay. Next, these are the parts of circulatory system. These are the very basic things. I'm not going through this. So this is our heart. So heart is a very special muscular organ which pumps deoxygenated blood to the lungs and oxygenated blood to the body. So why I'm saying it is a special organ?
because it pumps 365 days, 24/7. When we have taken birth, from that moment, it's pumping without our control, and it delivering us a surplus amount of blood throughout the body to work. So this is a very important and very special muscular organ of our body. If we talk about some more features, so in 1 minute it pumps about 70 to 72 times. In 1 hour it pumps about 4,000 to 4,300 times, and in one day, in complete 24 hours, it pumps about 1 lakh times. So that much strong organ it is having. So when it pumps, so very firstly, the fresh blood receives our heart only through these coronary arteries. So there are 3 major coronary arteries, as you are seeing in the picture. There is one artery on the right side and the 2 arteries on the left side. So one artery on the right side is the RCA, other one on the left side is left anterior descending, and the third one is left circumflex. So through these arteries, our heart gets blood supply, and when these arteries get blocked, our heart cells, or cells of the heart, demands blood in the form of sign and symptoms. Okay, that sign and symptoms in medical term known as angina pectoris. And the very interesting part of the sign and symptom of the heart patient, it occurs only when 80% blockage got our heart, when arteries of the heart get accumulated 80% of blockage, then only signs and symptoms come. This is the very interesting and hidden part of the heart disease. So coming to the next part. So what causes heart disease? So we are seeing that these are the causes of heart disease. First one is diet. Second part is aging. Third is genetics, lifestyle, gender, some unhealthy habits like smoking, tobacco, drink, diabetes, and stress. These are the major cause of heart disease. There are some more causes also. Very hidden cause is inflammation of the arteries. This topic is very important, but in a very short span of time we can't cover all these. So definitely if in future if I'll get time, definitely I will explain each and every part. Okay, so coming to the next, how blockage occurs. See, so this is the types of blockage. Here in a picture we can see that there is a mild coronary artery disease, about 20 to 40% blockage is there, and moderate coronary artery disease, about 40 to 70% blockage is there, and severe coronary artery, more than 70 to 80% blockage. If it occurs, then it is called as severe coronary artery disease. And in severe coronary artery disease, symptoms come before 70% or 80% blockage. No, not a single person get a symptoms. So we have seen that we have discussed that if our arteries get less blood supply, our cells of the heart speaks and it demands blood supply in a form of some sign and symptoms. This is called angina. So if a person is experiencing chest discomfort, arm and back discomfort, locking of neck and jaw, trouble in breathing, lightheadedness, or nauseating kind of sensation, then there might be a blockage, or that blockage reaches up to around 80%. Then only angina comes. Next. So what is heart attack? So when blockage occurs, the medical terms of blockage is atherosclerotic plaque. So when that plaque ruptures, some clots
get outside of that plaque, which stops the total supply of blood. So when blood supply is totally lost, in that causes our heart cells damages. It dies after that. So heart attacks, if we have to prevent the heart attack, we have to stop the progressive nature of atherosclerotic plaque. So coming to the solution part. So today is a naturopathy day, and as Dr. Kaushal sir has told that our body is comprised of 5 elements. So these 5 elements are Akash Tattva, Vayu Tattva, Agni, Jala, and Prithvi. So if we discuss about heart disease, coronary artery disease, how can we relate from this? How can we take help of Panchamahabhuta and do the treatment? So I'm discussing about these Panchamahabhuta. First one is Akash Tattva. So Akash Tattva, basically, it when we talk about treatment part, I had made 2 things in Akash Tattva: fasting and meditation. So fasting, there is a type of a fasting known as intermittent fasting, which is very safe and practical way to the person, which he can do at home, in which there is a patient has to do 16 hours of fast, and there is a window of 8 hours. In that 8 hours, he can have 2 times of meals. So intermittent fasting is very safe and very practical. The benefits of intermittent fasting is it reduces insulin resistance of the body, first thing. And second, it helps in detoxification part. And third thing, it reduces inflammation of the arteries. Even not only arteries, it reduces the inflammation of the whole body. So that is, fasting is very much important. We make our patient to do that fasting, intermittent fasting. The second part is meditation. In meditation, we comprised Yog Nidra. What is Yog Nidra? It's a guided meditation. It's about 30 minutes. This meditation helps to calm our mind. It manages our stress, and it helps in reducing blood pressures and improving heart rate of the person. Okay. Now coming to the second element, that is Vayu Tattva. In Vayu Tattva, there is a pranayam, 3 basic pranayam: Kapalbhati, Anulom Vilom, and Bhramari. So these pranayam helps in oxygenation of the body, plus it calms the mind also, and it also manages our blood pressure. The third element is Agni Tattva. In Agni Tattva, we comprise walking and exercise. So what is walking? It comes under slow intensity exercise. It's a medium intensity, we can say medium intensity exercise. In which is very beneficial for every heart patient, because it increases the endurance of the heart. The second one is exercise. In exercise, we include joint movement and some asanas, which helps in improving the blood supply of the body parts, and improves the lymphatic drainages also. So fourth element is Jala Tattva. So Jala Tattva, as we all know, our body is made up of 70 to 80% of liquids and water, that Jal Tattva. So that's why Jal Tattva is very much important. So we should make sure that our cells should be in a proper hydration stage to maintain optimum health of the person. So in that also, if we want to improve the quality of water, we should take hydrogen rich water and electrolyte reduced water, which gives many health benefit to the person, accounting in healthy heart. There is one treatment modality in naturopathy that is known as cold chest pack. That cold chest pack for 45 minutes gives a tonic effect to the heart, which improves strength of the heart. Okay. So these 3 things I have included in Jal Tattva. In this way, we treat our patient. So last and very important element is Prithvi Tattva. In Prithvi Tattva, we basically comprised diet. So
there are there are 7.6 points of diet. If we change our diet patterns, so we make very good results in our coronary artery disease. So the first point is healthy fat diet. So if our diet is rich in polyunsaturated fat, which helps in reducing inflammation of the arteries, like fish and flax seeds. So there mostly we make our patient to be on a zero oil diet. Why we make our patient to be on zero oil diet? Because every seed oils, we have seen that when a person taking seed oils, it increases the inflammation of the body, inflammation of the arteries, so which is not good for heart patients. So we make our patient to follow zero oil diet, and we ask our patient to take some omega-3 supplements and flax seeds also in the same time. Second part is high fiber diet. So I want to say that every person should take 30 to 40 gram of fiber every day to reduce insulin resistance and to reduce bad cholesterol. And it also helps in regularizing our bowel habits also, because if we take less fiber diet, we'll face constipation. In naturopathy, we say that constipation is the mother of all disease. So high fiber diet helps a lot in that. So we also ask our patient to take plant-based food, most like fruits and vegetables, because it contains most of the vitamins and minerals, and they are rich in water content also. They are a low, at the same time they are a low in calorie and high in fibers. There is one more concept which we apply to our patient, that is slow carb diet. So what is slow carb diet? When we replace wheat and rice with ragi, bajra, kodo, millets, some good millets are there. In foreign, there is one grain we find quinoa. So these millets and these grains, these cereals are slow carb diet. So it helps, again, it helps to manage our insulin resistance in the body. When we talk about salt, we ask our patient to take less salt, about less than 5 gram per day, because it causes mostly hypertension. Last, we ask our patient to avoid all deep fried food and packed food, fast food, sugary food. Okay, these foods which you are seeing here, again, it increases insulin resistance, it increases inflammation in the body. At the same time, it causes constipation. It causes many troubles in our body. So we in diet part, we cover all these things. In the last part, some additional things. We prescribe our patients some herbs and supplements also. There is a one supplement called Heartifine. It's a kiwi extract which prevents platelets hyperactivity. Plant-based stem cells we also suggest our patient to take, like green apple stem cell and red grape system. There is a one food supplement which is made up of stem cells of green apple and red grapes. In omega, we ask our patient to take omega-3, EPA and DHA, or if EPA DHA he can't take, he can take ALA. So and one very important vitamin is vitamin D3, and in the combination of K27. So vitamin D3 and K27, we ask our patient to take this supplement also. Fourth supplement, we ask our patient to take magnesium glycinate, which is very, very important for our body, because it takes part around 300 chemical reactions in the body. It takes about magnesium is a role in there. And second last supplement we ask our patient is B complex vitamins. And there is one very, very important herbs for our heart is Arjuna terminalia. So these are the things we ask our patient to take. And if everybody, if we follow all these disciplines in our life, he can easily prevent heart disease also. And at the same time, if a person is suffering from heart disease, so he can reverse this disease also, because it is very, very preventive disease, and we can manage this disease, and we can reverse this coronary artery disease. So that's all for me. Once again, I would like to thanks Venu Naturopathy Center
because today is a naturopathy day, and it's a very special day for everybody. And Venu Naturopathy Center has given us opportunity to celebrate in this way and make aware of the persons. Very, very important topics that doctors are taking up today. Thanks a lot. Thank you so much, Dr. Alam, for this very insightful presentation. We will now hear from Dr. Anshika Pathak. She is a consultant here at the Venu Naturopathy Center, specializing in holistic healthcare. She holds a bachelor's degree in naturopathy and yogic science, along with a master's in public health and a fellowship in research. With a primary focus on diabetes management, Dr. Anshika works closely with patients to address a range of health concerns. Today, she will be sharing her expert insights on diet for healthy aging and longevity. The floor is yours, Dr. Anshika. Welcome. Thank you so much, ma'am. So to begin with, I would say Hippocrates once said, food is medicine and medicine is food. So in naturopathy, I believe that food is medicine and medicine is food. Whatever our body needs and whatever our body wants during a disease or during aging, food has answers to everything. So in naturopathy, we believe the body is made up of 5 elements: earth, water, fire, air, and ether. And any disturbances in these elements can cause disease, but aging as well. So today we'll talk about common problems in aging. That includes the heart, the joint, the blood, the brain, the bladder, and the gut. I've written care for the heart, strengthen the joints, nurture the bloods, sharpen the brain, soothe the bladder, and clean the gut. So the common diseases or the common problems, which we'll talk about: the gut health, the peripheral artery disease, which is very common in elderly, heart health, stress and depression, urinary incontinence, and diabetes mellitus, of course. To begin with heart health, I would suggest in dietary recommendations arjun and cinnamon. The arjun tree is rich in antioxidants and heart protective compounds, and cinnamon lowers the bad cholesterol. Together, they are a best combination. There are also scientific evidences proving it. Also for the heart, the leafy greens, the spinach, kale, and these vegetables, which are, as also told by the earlier speakers, which are very good for heart health. The berries, of course, the blueberries and strawberries, they obviously reduce the oxidative stress and inflammation. Avocado, which is very famous nowadays, is very good for lowering the bad cholesterol that we say. Olive oil is very good cooking medium, better than any other oils, as it has very high capability to take high temperatures that we use in Indian cooking. Tomatoes, which are rich in lycopene. Lycopene is also against oxidative damage, and lycopene also, tomatoes can be a good alternative blood thinners. Garlic, of course, it improves the blood flow and lowers the blood pressure. Not immediately, but if taken consistently. Next, we come for the joints. For the joint pain, elderly are mainly, with aging, joint pain comes automatically. So drumsticks, which are rich in, of course, drumsticks, methi, and gond. Drumsticks rich in calcium, methi is an anti-inflammatory, and gond, which is an edible gum, which is easily available in market. It strengthens the joint and cartilage. Turmeric also reduces inflammation and pain. It can be used with taken with warm milk and black pepper. And also turmeric with black pepper and some water can be applied directly on joints. White sesame seeds are good in calcium, and also it supports bone health. And in elderly, osteopenia is also a great problem,
a big problem. And sesame seeds taken daily, half spoon, greatly helps. For joint pain, ajwain, mustard seeds, and Epsom salt. You can combine all these and make it into a small potli, and you can heat it over even in the microwave or over a skillet, and you can apply it on your joints, and it certainly helps, and it's helping. For cognitive health, which is also very common in elderly, we can use Brahmi, Ashwagandha, Shankh Pushpi, turmeric, and Ginkgo biloba and rosemary. All these herbs can be taken in combination as well, in a form of decoction made with all these herbs, and also in their separate forms, and can be taken as a supplement as well. Nowadays, a lot of Brahmi and Ashwagandha, Shankh Pushpi supplements are also available. So if you don't have time, you can take these supplements as well. Brahmi, very good for teas in the morning. Mixed with ashwagandha can also be taken. Ashwagandha, when combined with milk, is great for your sleep and brain functioning. Shankh Pushpi, for people with memory problems, Shankh Pushpi can be mixed with water. Little bit of honey can be added, and it can be taken once or twice a day. So these all herbs help greatly. Also, for the cognitive health, we can take Anu Tel, which is it is made up of with a lot of herbal blends, and even you can take mustard oil and put each one drop, two drops daily in your nostril. And you can then take steam with aroma oils, which can be rosemary, peppermint, lemon, or lavender oil to soothe your nerves. The another common problem is urinary incontinence. So for people dealing with this problem, they can consume pumpkin seeds, which are rich in omega-3, and they can add it to any salads or even in any smoothies, and it greatly helps. Also, barley water, jaw ka pani, it greatly helps with urinary health, and it is a very, very good diuretic. Just consuming barley water can help in prostate problems in men as well. Pomegranate peel. So you can save your pomegranate peel and dry it, make it a powder, mix with the water and consume. So it will help you to tone your bladder. And for people with great urinary urgency, they can consume this twice or thrice a day in little amounts. Amla, the great amla, strengthens the pelvic muscle and promotes bladder health. The watermelon seeds. So watermelon seeds can also be dried and mixed with water, like a powder. It can be made and then mixed with water. And it also, it's a diuretic and it supports the bladder function as well. Cranberries can be eaten throughout the day. And I would always recommend fresh cranberries, because the sweetened cranberries, it's not good according to my belief. Also, for urinary incontinence, there is a small nuskha. So sesame and carom seeds can be roasted in a skillet, and a little bit of jaggery can be added, and you can make it like a laddu, a small sweet, and it can be consumed in the night time. And it greatly helps with people suffering with nocturia or urination at the night while sleeping. And it greatly helps. Within 2 to 3 days, you can see good results, as per my experience with my patients. Next, we come to peripheral artery disease. Peripheral artery disease is very common in adults, and we can easily help these patients with small changes in their diet. So what happens in peripheral artery disease? There's a lot of pain in the legs and in the lower limbs because of the buildup of fatty deposits in the arterial wall. And how to combat this is that you can make a simple juice with the things that I've written here, which includes beetroot, that is good in nitrates, and it will improve the blood flow to the lower limbs. The cucumber, which is anti-inflammatory, and it will greatly help.
Carrot also rich in antioxidants. Lemon will, of course, as rich in vitamin C, as the earlier speaker said. Ginger, ginger also is an anti-inflammatory compound. This is a great for peripheral artery disease because it helps greatly with the circulation in lower limbs. Spinach also rich in magnesium. Amla that supports blood circulation. All these things, when combined together, makes a great drink for morning or as a brunch, and will greatly help in peripheral artery disease. The next thing that we come is atherosclerosis, very commonly found in the elderly people. So pomegranate, carrot, apples, lots of apples daily. An apple a day keeps the doctor away, that we say is for atherosclerosis, I must say. Lemon, ginger, turmeric, and cayenne pepper. Cayenne pepper is also in nowadays a trend in India as well. So pomegranate also you can add up in your salads or fruit bowls. And carrot is coming in season now. I think everyone who's over 50 should definitely consume carrot juices and help in their liver and reducing the bad cholesterol levels. Next we come to the diabetes mellitus. Cinnamon, of course, cinnamon is greatly improving the blood sugar levels. You can also consume it with your regular medications. And just even if you're making rice or porridge or maybe a dalia, you can add cinnamon to it to reduce the glycemic index. And there will be certainly lesser peaks in the blood sugar levels. Bitter melon or karela, we all don't like it, but we have to know that it has a specific compound that mimics insulin, and that is the polypeptide P. It's certainly very same as insulin. So bitter melon is of course good if consumed in correct amounts. Ginseng also, it improves the insulin sensitivity. Also very good for insulin resistance. Fenugreek has also compounds that improves the insulin response, and there's certainly a blood sugar reduction. Turmeric or haldi also it's less popular, but also manages the insulin resistance and reduce the complications associated with diabetes. And tulsi, the holy plant, also if consumed in the correct way, can also reduce the blood sugar spikes and also the anxiety that comes with managing diabetes. For the gut health, which is very common also in the elderly, continuous gastric troubles and acidity that our elders face, I think some good herbs can help them greatly. So ginger, peppermint, turmeric, fennel seeds, and chamomile. Ginger can be taken just in a warm water, add some ginger, some honey, and can be taken in the morning. It also helps you to relieve, and also it's good for aggravating your hunger. For elderly who don't feel hungry, ginger certainly helps, and it improves your hunger. Peppermint can solve both mental irritability and the irritability in your gut. So it's best consumed when you're having the gastric troubles. Turmeric here as well, it supports the gut lining, and for people with ulcers specifically, turmeric greatly helps. Fennel seeds can be taken, as we all do, as a mukhwas. After the food, you can have some fennel seeds, not the sugary ones, but mota saunf or the normal fennel seeds are great and a must have after you have had a good meal. Chamomile also calms the digestive tract, as well as it's also good for sleep. The main thing about constipation is water. Mainly, we are not taking water, and that is not helping. Even if we take all these herbs and all these food that I'm recommending, if we are not taking water, still constipation will persist. So it's better to keep yourself hydrated. Forget can put an alarm in their phones, and water will solely water will help a lot. Triphala, as we all know, it supports the regular bowel movements. 1 spoon in the night can greatly help with warm water. Isabgol or
the phylum husk acts as a natural bulk forming laxative. For those who don't get good stools, should consume isabgol as a good fiber to form your stools. Ajwain, also known as carom seeds. Ajwain is also good when you're having stomach ache, and you can just mix it with some black salt and consume it with water. Ajwain greatly helps. Ginger, I already told you, for the gastric trouble. Haritki is a very good laxative. So if there's very severe constipation, you can consume haritki also. So diet for if a person is continuously having constipation, which is very common with the patients. So I would recommend a warm, soothing bowl of khichdi for these patients with ghee. Ghee, after you cook the food, you add the ghee, not when you are cooking the food. So ghee, what it does, it soothes the gut, and the food easily travels through the intestines and the gut with the help of ghee. It lubricates the digestive tract. So warm water with ginger and fennel, they can have it throughout the day, or they can just take their water bottle, add some ginger pieces and some fennel in it, and consume it throughout the day. Also, they should avoid dry, cold, or processed foods, for example, namkeen, bhujia, or snacks. For patients with gut health, I think they should avoid all the fried foods. One more thing I would like to explain to all the elderly people is managing their nadi. It's very important. So we have two nadis. One is Chandra nadi and one is Surya nadi. You can all check it by keeping a finger under your nose and exhaling, and just check which one is working more, and then you would know how you're feeling, because emotional stress is also there in the elderly. So Chandra nadi is very cool, and people who are not very outgoing, mostly their Chandra nadi would be functioning, and people who are very outgoing and very, also agitation comes with the Surya nadi if it's active more. So pranayamas like anulom vilom or alternate nostril breathing greatly helps to manage and balance your nadis. So if your Chandra nadi is working a lot more, then you can add some ginger and some spicy garlic and food with the tikshana swabhav. And when your Surya nadi is working a lot and you feel more agitated, you can add cooling food in your diet. For example, cucumbers or coconut and coconut water. Thank you, everyone. Thanks a lot. Thank you very much, Dr. Anshika, for this very insightful expose of how we can maintain a healthy aging through elements that we can most easily find in India. Some products are not native to India, as one of our guests was explaining, and but we're very privileged in India to have accessibility to so many native and efficient products to promote healthy aging. So now I would invite Ms. Tanuja Joshi as the Managing Director of the Venu Naturopathy Center to moderate the Q&A and give her concluding remarks. I think some of the questions have been answered in the chat box, but I think just for people who may not have accessed or seen the chat box, I think the question there one was, is there a recording of we recently held first public interest talk at the IHC, which was on the eve of the World Diabetes Day. Yes, there is a recording available on the YouTube. I've shared the link in the chat box here. The other question that we had was, just give me, what is PABA stands for? I would request Dr. Moria, would you like to speak a little more on what PABA is? When Dr. Moria comes, they will, Yeah. So basically,
Dr. Maurya, we PABA can't hear you. can you hear me? Yes, we can. Okay. So this is PABA is a para-aminobenzoic acid, which is a organic compound, also known as vitamin B10, and it is a white crystalline substance. So the beauty of PABA, it synthesizes in the body, and the major role is to help utilize the protein. If body will utilize protein with certain thing, then obviously it controls the aging. And not only that, it with the manganese is stimulate the pituitary gland function. So that is also very important in the brain. And I will also explain that there are the very natural source which one can consume and can helps a lot. So and we know that, and we many time in the cosmetic things like sunscreen and all, they are putting PABA. So its role is very clear. Okay, so when I will talk about the sources of PABA, so I will tell only specific few which helps a lot, like wheat germ, गेहूं के जवारे. Okay, that helps a lot, and easy and very effective for most of the cases is molasses. Okay, so what is molasses? Molasses is a byproduct of cane sugar. Okay, and it is very, very important. How? Why? Because if you will take molasses, but again the sulfur-free molasses, in Hindi called sira. So, एक चम्मच 1 tablespoon molasses is equivalent to 1 glass, जितना 1 glass of calcium. जितना कैल्शियम आप 1 glass दूध पी के प्राप्त करेंगे, उतना कैल्शियम आपको मिल जाएगा आपके 1 चम्मच से मोलासेस से. एंड द ब्यूटी ऑफ मोलासेस, नॉट ओनली दैट, आपको आयरन, that you will get it from the molasses. So in old age, if you will take a molasses, 6 से 9 eggs, 6 से 9 अंडे के बराबर इसमें आयरन होता है 1 चम्मच में. So you can understand how much it is important, the PABA or through the molasses. So for the vegetarian, it is a very good source. You will get the calcium, you will get iron, you will get so many important thing, including the laxative. Even जिनका पेट साफ नहीं, जैसे डॉक्टर अंशिका ने बताया कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, या नेचुरोपैथी में हम लोग कॉन्स्टिपेशन, डॉक्टर आलम ने बताया द रूट कॉज ऑफ द डिजीज. So that helps a lot. And in old age, these are very common. So the PABA, it is actually very, very effective. That can be applied externally in form of cream, which it is available in the market. But in natural source, is the molasses. Again, try sulfur-free, mushroom, spinach. So that is the most important in aging related. Even that also helps in the arthritis. Okay, so pain aches may be molasses. So इसीलिए that's why I'm just explaining molasses and PAB here. There are other sources also available. Thank you, Dr. Maurya. Then there was a question saying, should we take natural or synthetic vitamin C? Sorry, I'm not able to hear. Can you give me that? Should we take, Anshika? Would you like to answer that? Yes, I would always recommend natural vitamins and We can't hear you, Anshika. You have to unmute yourself, Anshika. sorry, ma'am. I was explaining that yes, always the natural source of vitamins, because our body is made up of 5 elements. So should be our food. If synthetically produced body are not very synthetically produced vitamins are not very compatible with our body. So whatever our body is made up of should be only put in our body and should be only used for our body. I would highly recommend natural. Okay, and the next question was, what causes aging-related cramps and which supplements will help? Dr. Maurya, would you like to take this, or?
I think the answer Can has you been hear given me? there. Yes. Okay, so age related, अगर हम cramps की बात करें, and when we enter in the medical details and the pathology and the exact cause is not known, but there are certain factors, certain deficiency, there are certain element which is deficient. जैसे मैग्नीशियम का कमी होना, कैल्शियम का कमी होना, जैसे आपका फास्फोरस का कमी होना, तो इसकी वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ने के चांसेस हमेशा रहते हैं. एंड व्हेन योर मसल इज फटीग, मसल फटीग, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, so these are the reason. And for that, again, the solution is we have both solution, natural as well as the some salt form or something. So Doctor, sorry, carry on. ji, so for the cramps, I can suggest you simple hydrotherapy and the salt treatment. So for the magnesium, we can use a magnesium salt, which is available in form of Epsom salt. Externally, that can be applied. But how you will apply? Take a magnesium sulfate in a water and put a cloth and wrap it around your, for example, you have a cramp in your calf muscle or in leg. Okay, and after that, you can apply the castor oil. So by combining these two, you will get a really good result. When it is comes to the internal consumption, then I would recommend you what is called as pumpkin seed. That is also very good source of the magnesium. So someone can have 10 to 15 gram magnesium seed, but again, soaked one. Do not try the dried form because it's contain phytic acid. That is again the toxicity. So these two things helps, and then the moringa, banana. So there are many things which helps a lot in cramps. This is very specific for the cramps. Thank you, Dr. Maria. Dr. Anshika, for you, you had talked about olive oil, avocado, and then you had also talked about cranberries. Yes, ma'am. And these are not native to India. So the question is, what are the locally available supplements? So that's olive oil, avocado, and cranberries. As I already explained in the slide, there were many other things for vitamin C, but pomegranates and cherries with red currants are also an alternative for cranberries. Also, raspberries, which are also easily available in India, can be consumed. Thank you. Dr. Alam, you had answered. Maybe you can also further reply back to what is the electrolyzed reduced water and where to source it from. Also, hydrogen-rich water. Can you just please respond to that? Okay. So, हमने chemistry में we have studied the electrolysis process. So, what is electrolysis process? वहाँ पर के एक कैथोड एक एनोड होता है. वहाँ पर हम लोग जब भी पानी को वहाँ से पास करते हैं तो पानी के अंदर में जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिनरल्स होते हैं वो कैथोड और एनोड के पास में आके रुक जाते हैं और हमारा जो वाटर हमको मिलता है वो हाइड्रोजन रिच मिलता है. तो ये पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोला जाता है. ठीक है. और मार्केट में ऐसे बहुत सारे आयोनाइजर्स आर अवेलेबल वेयर वी कैन सोर्स इट फ्रॉम. और हाइड्रोजन रिच वाटर जो होता है ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी बर्निंग टॉपिक नाउअडेज इन अ फील्ड ऑफ वेलनेस कि अगर हम हाइड्रोजन रिच वाटर का यूज करेंगे तो इट हेल्प्स इन एजिंग प्रोसेस, इट हेल्प्स इन मेंटल अलर्टनेस, इट हेल्प्स इन माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स. ठीक है. ऐसी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है हमारे बॉडी के अंदर में अगर हम हाइड्रोजन रिच वाटर लेते हैं तो इन सारे लेवल्स पे हमको रिजल्ट्स मिलते हैं. हमने ऐसे बहुत सारी स्टडीज में पाया है कि जो एथलीट्स हाइड्रोजन रिच वाटर का यूज कर रहे हैं उनका इंड्योरेंस, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी कैपेसिटी, उनका परफॉर्मेंस डे बाय डे इम्प्रूव करता जा रहा है. वी हैव सीन मैनी पेशेंट्स ऑल्सो जो कि हार्ट के पेशेंट्स थे
जो प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस वाटर, मतलब अपना ये जो हाइड्रोजन रिच वाटर है वो हम जब ले रहे हैं पेशेंट को, जब हम वो दे रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। इवन कोलेस्ट्रॉल में भी उनके काफ़ी अच्छे, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बात होती है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। सोर्सेस हम भी प्रोवाइड करते हैं और बाकी भी बहुत सारे मार्केट में देयर आर अवेलेबल। Thank you, Dr. Adam. There's a question, can naturopathy help in curing or containing tinnitus? Who would like to take this? Anshika, would you like to answer? Yes. Tinnitus is literally buzzing in your ears. So your ears will having this tingling sound all the time, and it's a very irritating and frustrating for the person who is dealing with it. And only the person can understand what's going on with them. So naturopathy deals with all the problems and disorders related with every other issues that you might face. I would recommend, as per dietary advices, to take anti-inflammatory foods, as wherever there's a problem in the body, there's inflammation. And as I already explained, the leafy greens and the berries work like magic. Also, I would recommend zinc-rich food like pumpkin seeds. It helps in the nerve function. So basically, it's the nerve that goes to your ear that's having a problem. Also, potassium helps in the fluid level regulation in the body. And if you are consuming a lot of sweet potatoes, bananas, and oranges, you maintain a good level of potassium in your body. Also, I would recommend you not taking too much salt, as it increases fluid retention, and also caffeine and teas. So that you should avoid. And also sugary foods and alcohol should be avoided at any cost for tinnitus. Also at Venu Naturopathy Center, we are greatly helping for patients with tinnitus. And I recommend everyone and anyone who is suffering with tinnitus to visit us, and we can help you with things like acupuncture and compresses, different types of herbal medications and herbal decoctions. Thank you. Thank you, Dr. Anshika. We'll just take a quick reply. Dr. Moria, can you quickly just say where is molasses available? And then I think we have a speaker has been able to connect back. I'll hand it back to Dr. Maria. Dr. Moria, quickly, can you just reply to where is molasses available? Dr. Moria, please unmute yourself. Can you hear me? Yes. Yes, we can, Dr. So Moria. basically, it is available online because nobody is keeping because it is very it's get denatured fast. So it is available in season and it's online. But try to buy, before buying things, just check it should be sulfur free. Thank There, you. Sorry, thank you. I think, Dr. Maria, I hand it back to you. Thank you all. Thank you, Ms. Joshi. So right now we will have the privilege to hear from Dr. Meghnad Verma, research officer from AIIMS Raipur with 15 years of clinical experience, who will talk about the benefits of yoga for healthy aging. Dr. Verma holds a BNYS from Sri Mahavir College of Naturopathy and Yogic Sciences. He further holds an MD Yoga from Esvyasa University, Bangalore. Currently, he is working as research officer at the Department of Yoga and Naturopathy in CCRYN Mind-Body Intervention Project at AIIMS Raipur since November 2021. Welcome, Dr. Verma. The floor is yours. Yeah, thank you so much. Hello, everyone. Can I share my slides? Yes, you can, Dr. Meg. You can share your slides.
I think his connection is not strong. एजिंग का मतलब क्या है? एजिंग का मतलब होता है कि जो बॉडी सेल्स होते हैं, जो बॉडी टिश्यूज होते हैं, जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं, वो अर्ली एज में अपने जो एफिशिएंसी है या एफिकेसी है उसको वो लूज कर देते हैं. सो दैट इज एजिंग. और एजिंग में एक बात और बोली गई है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एजिंग. मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जितना अच्छा होगा, आपकी सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जितना अच्छा होगा आपका एजिंग उतना डिले होगा. आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जितना खराब होगा एजिंग उतना जल्दी आएगा. सो व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ? सो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं. फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, डाइट, एक्सरसाइज एंड मोर इम्पोर्टेंट आजकल हम स्पिरिचुअलिटी को भी क्वालिटी ऑफ लाइफ में लेके चलते हैं. बिकॉज द सेंस ऑफ वेलबींग, ये जो टर्म है जो हम लोगों ने बहुत बहुत आई थिंक लास्ट 7 to 8 years में ये बहुत पॉपुलर हो रहा है. द सेंस ऑफ वेलबींग, द सेंस ऑफ वेलबींग इज नॉट रिलेटेड विद द रिचनेस. आप कितना रिच है वो सेंस ऑफ वेलबींग पे डिपेंड नहीं करता. सेंस ऑफ वेलबींग डिपेंड करता है कि हाउ यू सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ. मतलब आप अपने लाइफ से कितना सेटिस्फाइड है उस पर डिपेंड करता है. तो ये रिसर्च में प्रूव्ड हुआ है. ऑलरेडी हमने एम्स में अभी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हम वर्क कर रहे हैं फॉर दी किडनी पेशेंट, दैट इज सीकेडी पेशेंट जो कि ऑलरेडी हीमोडायलिसिस पे चल रहे हैं. तो हमने उस पर ये रिसर्च किया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम कैसे योगा के थ्रू बढ़ा सकते हैं. और ऑलरेडी हमारे इंडिया में और अब्रोड देयर आर थाउजेंड रिसर्च जो ऑलरेडी हो चुके हैं और ऑलरेडी ऑन गोइंग है. ये सब ने प्रूव किया है कि योगा, ये जो मैंने दिया हुआ है, इंक्रीजेस एंड रिड्यूसेस. तो फर्स्ट पॉइंट है योगा इंक्रीजेस द फीलिंग ऑफ वेलनेस, द पॉजिटिव एटीट्यूड, energy level, memory, attention, concentration, social skills, self acceptancy, flexibility, strength. And another side, yoga reduces anxiety and stress, depression and tension, sugar, cholesterol, increase HB. So ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो योगा जो है फिजिकल पैरामीटर्स लाइक वेट, लाइक बीएमआई, लाइक हमारे जो भी सिम्टोमोलॉजी है उसमें जो बॉडी सिम्टम्स है उसमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखा गया है. वैसे ही जो पैथोलॉजिकल पैरामीटर है, अच्छा ये चला गया क्या? एक मिनट, वन मोर टाइम. हाँ ठीक है. तो योगा का जो पैरामीटर अगर हम देखें, जब बॉडी चेंजेस की हम बात करते हैं तो फिजिकल पैरामीटर्स होता है. वैसे ही योगा के जो रिजल्ट्स हैं स्पेशली बायोकेमिकल पैरामीटर्स, जैसे इसमें दिया हुआ बायोकेमिकल पैरामीटर्स में से कोलेस्ट्रॉल है, वैसे ही और भी जो हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, IL-6 होते हैं, IL-10 होते हैं, नेक्रोसिस फैक्टर्स होते हैं, ये सारे मार्कर्स जो हैं हमें योगा रिसर्च में हमने देखा कि काफी हद तक रिड्यूस होते हैं. सो दैट ये जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है जैसे आर्थराइटिस है या एंकोलाइजिंग है और भी कई सारे आर्थराइटिक या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, इसमें योगा बहुत हद तक हेल्पफुल पाया गया है. एक्चुअली अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज रिलेटेड विद दिस डिजीजेस. जैसे हमने ये मेंशन किया हुआ हाइपोथायराइडिज्म, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर डिजीज, ये सारे डिजीज स्पेशली एंजाइटी इन स्ट्रेस, ये सारे डिजीजेस क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं. क्वालिटी ऑफ लाइफ के कई पैरामीटर्स होते हैं लाइक इकोनॉमिकल, यानी कि कई जगहों पे इकोनॉमिकल बर्डन इन डिजीजेस की वजह से बहुत बढ़ जाता है फैमिलीज में, खासकर पुअर फैमिलीज में, लोअर मिडिल क्लास में. इनडायरेक्टली फिर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं. वैसे ही लॉन्ग टर्म डिजीजेस की वजह से डिपेंडेंसी बढ़ती है पेशेंट्स में, स्पेशली खासकर अगर कोई अर्ली एज वाला है, स्पेशली जैसे 20 years का या 30 years ऑफ एज का है
आर्थराइटिस तो है ही, साथ ही साथ मोबिलिटी अगर उनकी डाउन हो गई है, रेंज ऑफ मोशंस कम हो गए हैं, ये सारी चीजें इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, और ये डिपेंडेंसी अगेन एक सोशल बर्डन क्रिएट करता है, और वो सब मिलके क्या होता है, डिस्ट्रेस, दैट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस related with any condition, either arthritis, either blood pressure, either diabetes, either anxiety, डायरेक्टली पीस, डायरेक्टली रिलैक्सेशन, ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इनडायरेक्टली आपके जो डिजीज कंडीशंस है, जैसे आर्थराइटिस है, वेट है, डायबिटीज में शुगर है, इन सब को ये रिड्यूस करता है, और जब इनका रिडक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें या क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें, जैसे क्वालिटेटिव I think there's been a network connection problem. Dr. Maria, I think we've lost the connectivity there. Yeah, I joined Yes. already. Oh, he's joined. back. Oh, yes. Okay. Welcome back. Yeah, thank you. Actually, because I'm in very native place, and it's 1 minute, just give me 1 minute. Yeah. So, everybody, it's visible now? Yes. Okay. So, yeah. Now the scientific basis of yoga is, see, there are so many research going on. Actually, अभी अगर हम अप्रोक्स देखा जाए तो 10,000 के अप्रोक्स ऑलरेडी रिसर्च योग पे हो चुके हैं। ये ऑलरेडी इंडिया की बात हो रही है, अब्रॉड और इंडिया मिला के तो और ज्यादा है। तो ये सारे रिसर्च आपको, ये स्पेशली हमने जो रिसर्च की बात की, जैसे एचपी एक्सिस आपको पता होगा, इट्स अ हाइपोपैथमस हाइपोपिट्यूटरी एक्सिस, मीन्स ये बेसिक है योग के बेसिस इन द सेंस क्या होता है कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में बहुत सारे मैकेनिज्म्स हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे अच्छा मैकेनिज्म ये बताया गया है, जिसको हम साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। सो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इज रिलेटेड विथ माइंड, एंडोक्राइन सिस्टम एंड देन इम्यून सिस्टम। ओके, सो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी मैंने जैसे बताया, इस पे भी आजकल बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुके हैं, खासकर अभी जेनेटिक लेवल पे भी रिसर्च चल रहे हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस है उस पे भी रिसर्च चल रहे हैं। इन सब पे बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट योगा का है। अब ये एक टॉपिक है, हाउ योगा ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। सो इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो प्राइमरी डायमेंशंस में हमने देखा हुआ है कि इनिशियल लेवल पे सबसे अच्छा एस्पेक्ट होता है रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस। मतलब आप प्रमोट कीजिए अपने पेशेंट को, खुद को, रिगार्डिंग दी रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस, बिकॉज इसमें भी दो एस्पेक्ट होते हैं, योगा प्रैक्टिसेस में भी दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट बोला गया है कि आप अगर अननोनली प्रैक्टिस करते हैं, योगा में हम लोग बोला जाते हैं कि व्हेन यू प्रैक्टिस योगा and with awareness, so that will give you 200% result. But when you practice yoga without awareness, that will give you less result, because awareness is very very important aspect of yoga. So मैंने वही कहा कि first just do yoga. Why? Because जब आप योग करेंगे तो definitely there are so many changes will happen. आपके शरीर में बहुत सारे changes होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे फर्दर योग करने के लिए। अब जैसे आप योग करते हैं तो योग करने के बाद आपके
बॉडी के जितने भी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एब्डोमिनल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देन ब्रेन, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें योग का इफेक्ट नहीं आएगा। मस्कुलर लेवल पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, पेन कम होगा। एंडोक्राइन सिस्टम में जो हमारे हार्मोन्स है, उसकी जो एक्सक्रेशन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, वो इनडायरेक्टली अदर सिस्टम को हेल्प करेगा फॉर द रेगुलेशन। वैसे ही जीआई ट्रैक पे, माइक्रो वेसल्स पे सर्कुलेशन इंप्रूव होगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग इफेक्ट। इसी तरह से योगा का माइंड पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, बिकॉज योगा इटसेल्फ अ मेडिटेशन। हम लोग कहते हैं कि मेडिटेशन में तो मेडिटेशन होता ही है, बट अगर आप योग में विथ अवेयरनेस बॉडी मूवमेंट को अगर आप करते हैं तो इटसेल्फ अ मेडिटेशन। और कहीं ना कहीं हम एक नो थॉट यानी कि थॉटलेस स्टेज की ओर जाते हैं, और जब भी आप थॉटलेस स्टेट की ओर जाते हैं देयर इज अ रेस्ट, माइंड को रेस्ट मिलता है। सो इस तरीके से योगा के अलग अलग एस्पेक्ट पे रिजल्ट जब हमको मिलता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। दूसरा है एडेप्टिंग हेल्दी डाइटरी हैबिट्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बोलते हैं जो कि योग में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है रिगार्डिंग मास्टरिंग ओवर द माइंड। क्यों? क्योंकि नॉलेज तो सबके पास है कि शुगर नहीं खाना चाहिए, नॉलेज तो सबके पास है पिज्जा नहीं खाना चाहिए, नॉलेज तो सबके पास है कि चाय नहीं पीना चाहिए, नॉलेज तो सब है कि हमें एडिक्शंस नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी हम हेल्दी हैबिट्स क्यों नहीं फॉलो कर पाते? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द माइंड। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि योग के द्वारा ही हो सकता है, दैट इज द माइंड कल्चरिंग। और माइंड कल्चरिंग में भी हमने ज्ञान योग का सहारा लिया हुआ है, जिसमें बोला जाता है कि फर्स्ट श्रवण। श्रवण मीन्स हियरिंग। हियरिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप कान से सुने, हियरिंग का मतलब होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो भी आप अंतर मन से सबकॉन्शियस लेवल पर सुन रहे हैं। जो आप लेक्चर में सुनते हैं, जो आप किसी भी मीडियम से सुन रहे हैं या अपने रिसीव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड श्रवणा। देन मनना। मनन मीन्स कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन या हम साइकोलॉजी बोलते हैं रिहर्स। आप उस बातों को, उस थॉट को, उस नॉलेज को बार बार रिहर्स करें, बार बार सुने। देन थर्ड प्रोसेस होता है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन मीन्स व्हेन यू एस्टैब्लिश्ड दैट नॉलेज, जब उस नॉलेज को आप एस्टैब्लिश करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, देन इट बिकम्स अ हैबिट। सो दैट इज द एडेप्टिंग हेल्दी डाइटरी हैबिट्स, या हेल्दी हैबिट्स हम इसको कह सकते हैं। तो दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू दी प्रैक्टिस ऑफ योगा। आप सिर्फ नॉलेज लेके आप बदल नहीं सकते, आपको श्रवण, मनन एंड निधि ध्यासन, इन तीनों स्टेज को अडॉप्ट करना ही होगा। लास्ट है डेली मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट इसमें भी मैं बोलना चाहूंगा मेडिटेशन से पहले अंतःकरण शुद्धि बहुत जरूरी है। अंतःकरण शुद्धि मीन्स व्हेन यू बिकम प्यूरिफाई योरसेल्फ थ्रू द माइंड एंड द बॉडी। जब आप दोनों लेवल पे प्यूरिफाई होंगे, देन द मेडिटेशन विल बी फ्रूटफुल। मेडिटेशन इट्स लाइक अ इंट्रोस्पेक्टिव। आप अपने खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज अध्यात्म। खुद को जानना, सेल्फ नॉलेज, खुद को जानना। लेकिन अगर आपका सेल्फ अगर शुद्ध नहीं है, प्यूरिफाई नहीं है, तो अगर आपने खुद को जाना भी तो वो आपको कहीं ना कहीं बाद में नुकसान दे सकता है। तो बेस्ट है मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो हेल्दी लिविंग, यानी कि आप अच्छी चीजों को फॉलो करें, दैट इज यामा एंड नियमा। अच्छी चीजें, अच्छे हैबिट्स जो आपने पढ़ा होगा, चाहे वो ट्रूथफुलनेस हो, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी हो, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड हो, बहुत सारी चीजें, ये सारे एस्पेक्ट में करना चाहिए। अदरवाइज मेडिटेशन इज नॉट दैट मच फ्रूटफुल, क्योंकि मेडिटेशन में आप क्या करोगे वो आप ही को पता रहेगा, राइट? तो ये तीनों एस्पेक्ट मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपका काफी अच्छा होता है सारे एस्पेक्ट में, चाहे वो डाइट हो, एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, थॉट हो, देन
आपका एजिंग स्लो डाउन होता है। इस पे भी कई सारे रिसर्च हो चुके हैं। एक बहुत ही सिंपल रिसर्च मैं बताता हूँ कि हमने एनिमल्स में देखा है कि जिनका ब्रेथ रेट, आपने ब्रेथ रेट सुना होगा, नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट जो हम बोलते हैं, जिनका जितना कम होता है उनकी लाइफ लॉन्गेविटी उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे एलिफेंट्स है और भी कई एनिमल्स में जो ज्यादा लंबा जीते हैं, उनका जो लाइफ एज है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही ह्यूमंस में भी, स्पेशली प्राणायाम के बारे में मैं एक मिसकंसेप्शन आपको मैं दूर करूंगा कि प्राणायाम इज नॉट रिलेटेड विद जो हम लोग ब्रेथ प्रैक्टिस बोलते हैं या ब्रीदिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। प्राणायाम इज मेनली अ ब्रीथ कंट्रोल। प्राणायाम आपको आपके ब्रेथ को कंट्रोल करना सिखाता है, और ब्रेथ कंट्रोल इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ एजिंग। अगर आपका ब्रेथ कंट्रोल्ड है, यानी कि आप बहुत समय तक अपने ब्रेथ को रोक सकते हैं, आपकी ब्रेथ रेट कम होती है, तो वो आपके एज को बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस डिजिटल रिवोल्यूशन। ये मैंने इसलिए बताया, स्पेशली मेरे जो कलीग्स है, मेरे जो फ्रेंड्स है, डॉक्टर्स है, उसके लिए मैंने ये एडवाइस किया हुआ है कि दीज आर द एप्स ऑलरेडी लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको भी इसी तरह का अप्रोच लेना चाहिए टू कनेक्ट द यूथ, टू कनेक्ट द चिल्ड्रन। क्योंकि हम यूथ को, चिल्ड्रंस को हम ये लेक्चर्स देके हम तुरंत एडप्ट नहीं कर सकते। आपको उनके ही एटमॉस्फेयर में एडप्ट करके, उनके तरीके से, उनके रेशनल बिहेवियर को, उनके इंटेलेक्ट को सेटिस्फाइड करते हुए आप आगे बहुत बहुत अच्छे से अपने सेंटर को ग्रो कर सकते हो। ये मैंने नाम कुछ सेंटर ऐसे दिए हुए हैं, दे आर वर्किंग ट्रेमेंडसली। कुछ ऐसे सेंटर्स में जो कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, कुछ जैसे ये ब्लूमिंग वैली है, दैट इज फ्रॉम कोयम्बटूर, ये पीसीओडी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लेबर पेन को बहुत अच्छी, इन्होंने कई बार हाइड्रोथेरेपी से लेबर पेन को एलोपैथी वालों के साथ मिलकर इन्होंने रिसर्च भी किया हुआ है। दैट इज अ शुभम क्लिनिक। ये शुभम क्लिनिक जो है ऑटिज्म ट्रीटमेंट करता है नेचुरोपैथी के द्वारा। ऐसे ही एस व्यासा है, एस व्यासा के पास आई थिंक 8 डिपार्टमेंट है, कैंसर, रेस्पिरेटरी, देन ओबेसिटी, एवरीथिंग। वैसे ही एनआईएन है जहां पे कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने एग्जांपल इसलिए दिया, इससे आप भी इंस्पायर हो सकते हैं। बट ये सारे पॉपुलर क्यों हुए हैं? नॉट बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट, बट बिकॉज ऑफ डाटा मैनेजमेंट। ये डाटा को मैनेज करते हैं, शो करते हैं, पब्लिश करते हैं और पब्लिक के पास लाते हैं, पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो मैं भी चाहता हूं कि जो भी मेरे कलीग्स या जो भी मेरे नेचुरोपैथी सेंटर वाले इसको देख रहे होंगे, जस्ट गो थ्रू इनकी वेबसाइट्स पे जाइए, आप देखिए, राइट। तो ये एक स्मॉल मेरा एक प्रेजेंटेशन था। और थैंक यू सो मच डॉक्टर कृष्णा, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, ये प्लेटफॉर्म दिया टू शेयर माय नॉलेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Verma, for your very insightful presentation of the power of yoga. Definitely, it seems to be limitless in terms of how it can help us limit aging and live life to the fullest. I don't know if there are any more questions on the chat box. I don't see any question on the chat box, but I think you mentioned somebody had raised their hand. There is one more question: how to mitigate aging-related fatigue and low energy levels? Dr. Maurya, would you be able to answer that question? Anshika, can you take it? I think Dr. Maurya is not. Anshika, unmute yourself. Yes, ma'am. So aging related fatigue mainly occurs due to incomplete rest and lack of sleep in the elder age. Am I audible, ma'am? Yes, you are. Yes. So to combat this, I think a good lifestyle with the rising up early, sleeping at the correct time, taking good amount of healthy balanced diet is very important. And if you're really having low energy levels, I would recommend to get your blood checked and see whether you're deficient in maybe hemoglobin or vitamin B12,
or vitamin D. Thank you, ma'am. One more question. Dry mouth, is there treatment? Yes, ma'am. There's very good treatment for dry mouth at Venu Naturopathy Center as well. I would recommend for the person who is asking to go for coconut oil pulling. So they have to take virgin coconut oil, maybe 1 spoon, and just keep it in your mouth and do the movement of like this, and you can repeat it for continue 15 minutes daily early morning, and it will certainly help with dry mouth. Thank you, Also, it's Anshika. very, yes, ma'am, it's very important to check the causes as well. So it's very important to visit a doctor. Thank you. Dr. Maria, is there any other hand raised? Can you see? I don't see any hand raised anymore. So I think we may conclude. Thank you, Maria. Thank you. Thank you, Maria. So just want to end by saying that the Venu's vision statement has been a good sight and quality life for all, which reflects our commitment for holistic well-being of our patients. Venu has always responded to the needs of our patients, and the Venu Naturopathy Center is another step in that direction. With the longevity of life increasing, eye care is no longer just restricted to cataract and refractive errors, but we also have lifestyle diseases affecting specifically diabetes, and the better outcomes in eye care also depend on how we manage the lifestyle diseases with specific emphasis on diabetes. And Venu Naturopathy Center is a step in that direction for the well-being and better outcomes for our patients. While modern medicine has definitely contributed towards not only a lot of control and managing of critical diseases and increasing longevity of life, it also has thrown us challenges. And as the topic today is healthy aging and longevity, modern medicine has definitely brought about longevity, but age is something we can't stop. But healthy aging is something we definitely can contribute to. And naturopathy has a huge role to play in making our longevity of life a healthy span for us. And I think all our speakers have endorsed and I'm sure answered some of your questions as to how do we have healthy aging. And this is just a small effort, and we hope to continue sharing such webinars and tips on a better quality of lifestyle and living. Back to you, Maria. Thank you, Ms. Joshi. So as we conclude today's session, let's reflect on the profound vision of Mahatma Gandhi and the timeless principles of naturopathy. This webinar is more than just a discussion. It's a call to action for all of us to embrace a lifestyle that not only adds years to our lives, but also life to those years. On behalf of the Venu Naturopathy Center, we thank you for being part of this important dialogue. Let's work together to create a world where healthy aging and longevity are within everyone's reach. Thank you very much and have a good evening. Thank you very much, Dr. Maria. Very much. And everybody. Thanks a lot.